So, hello students. Uh, One video I have uploaded on my YouTube channel. In that video, I have discussed about reading writing operation on text file character files. In this video, I'm going to discuss about uh, the same operation, reading and writing operation on binary files. Means file input and output on binary files. As I have already taught you, there are two types of files: text file and binary file. So the programs of text file I have already discussed in the previous video was that, and now here I am going to discuss another program to perform read and write operation on binary files. Okay, so here we go. You can see on the screen I have written already. Okay, if the things are clear, I think let me increase the font of this. Maybe bigger font will be required. Okay, so here I'm going to discuss program to write on binary file. You know, binary files are those files in which the data are stored in machine language form, machine readable form. Means if you try to open that file, you cannot read it. That is not human readable. Okay, for a security purpose, sometimes the binary files are created, and this file only can be read by the software or program only. Yeah, normally you cannot open that. You can open that file, but you cannot read that file. So that is about binary files. Okay, so how to write the data means how to do file output, means how to write the content in binary file. This program is for that. After that, I will teach you how to read the data, means how to read the data from that binary file. Okay, everything I will tell you. So the first program is for that only. So this import java.io. Java.io is a package. Dot star means all the classes of this package we are importing. Okay, and see here, here in this program we are using this file output stream and data output stream classes which belong to java.io package. These two classes of java.io package we are using. Okay, so file output stream and data output stream. Okay, here you know these things, and this I have already taught you. Throws IO exception means runtime errors. If any input output exception will occur in this main function, this because of this program will be terminated. If any input output exception will be generated, कोई भी input output exception अगर program में होगा, तो because of this the program will be terminated and you will get the error message that this exception has occurred. ऐसा कुछ message, standard message आता है. तो ये जरूरी है, यहाँ पे लिखना जरूरी है. Please don't ignore it. If you will not write it, you will get the error message. Okay. Now you know this scanner class very well. Here I have declared roll number and marks of one variable for roll number, another variable for marks. What we will do in this program, we are going to write roll number and name of 5 students in that file. This detail we are going to type in the program. Okay. So here, first of all, we have to create the object of file output stream. File output stream is the class. Now we are creating the object of file output stream. The name of object is what? Fout. So what will happen? Output stream will be created. An output stream, file output stream will be created. Okay, by this object. If we are creating this object, means we are creating the file output stream we are creating. Okay, and file output stream, you know, this is a temporary memory where the data will be stored. Means when program will give the output, that will go to, that will not go directly to the file, it will go to the file output stream, and from there it will be written to the file. So file output stream or file input stream, these are temporary memory. Okay, so here file output stream is what means we in this programming what we will do, we will take input from keyboard. So for keyboard, for input devices, there is input stream that is called standard input stream. So जो कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे वो पहले कहाँ जाएगा? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में जाएगा. स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी होती है प्रोग्राम और इनपुट डिवाइस के बीच में. ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में जाएगा, वहां से डेटा प्रोग्राम वहां से डेटा फेच करेगा, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जब आउटपुट कहाँ देना है इस प्रोग्राम में, आउटपुट कहाँ देना है? मॉनिटर पे नहीं देना है, आउटपुट कहाँ देना है? फाइल पे देना है, फाइल आउटपुट. So after processing, the program will write the data on file.
So it will not it will not go to file directly. In between program and file there is file output stream that we are creating here. मीन्स प्रोग्राम से डेटा पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम नहीं, हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम वहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे जो डेटा जा रहा है कहाँ जा रहा है, फाइल में जा रहा है। तो वी व्हाट वी रिक्वायर, फाइल आउटपुट स्ट्रीम वी रिक्वायर। तो डेटा प्रोसेस होके कहाँ जाएगा, पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा, फिर वहां से फाइल में चला जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू आर गोइंग टू राइट इन द any file here, we are talking about binary file. So what is the process? The input will be done by input will be taken from keyboard, that will go to input stream, that is called in standard input stream. From there program will fetch the data, okay, and after processing the data will be sent to the file output stream, and from there it will be written to the file. This is the process we are going to perform. Actually it will happen. Okay, so come to this point. So I hope that things are clear, the basic things I have explained again for revision. Now listen. So here we are creating the object of file output stream. By creating the object of file output stream, what are we doing? We are creating a file output stream. File output stream we are creating for the file marks.dat. So what will happen? File output stream will be created, and that stream will be connected with this file. The file name is marks, and .dat means this extension we use for binary files. .data file, .dat file. So .dat means this is for binary files. Okay, since we are going to create the binary file, so we have done this. So again I am repeating, by creating this object we are creating the file output stream, and that file output stream will be connected to this file which name is going to be marks.dat. Okay, then data output stream. Then we are creating the object of data output stream dout. This object is responsible to write the data on the file, and this we will connect with this file output stream, that is fout. You can see the object of this we are connecting with this dout. Okay, so this dout will write the data in file output stream, and that is connected to this marks.dat. That file data entered data will be written to the file, that's name is marks.dat. Okay, I hope it is clear. So this fout is compulsory here. We are connecting this file output stream with this object. Okay, I hope it is clear. So now, as I said, we are going to take input what, 5 details of 5 students. That's why this loop is repeating 5 times. Means we'll take input from the keyboard and we'll write the data on the file. Output कहाँ देना है, फाइल पे. इनपुट कहाँ से लेना है, कीबोर्ड से लेना. ओके, ये प्रोसेस है. तो फाइल पे डेटा राइट करने के लिए, टू राइट द डेटा ऑन फाइल, हियर वी हैव object dout. Okay, this object dout is responsible for that only. Just a minute. Wait a minute, student. I'm connecting this device. Don't worry. Since I'm live, so I cannot pause it. I have to show everything. Okay, so I think it is clear to all. And tell if you have joined, tell others also to join this time. Better. Otherwise, it will be uploaded afterwards on the YouTube channel, so you can watch afterwards also. But still, if you join this time, it will be better. Okay. Now listen. See here, I equal to 1. This loop is repeating. I am repeating this loop 5 times because we are going to take the details of 5 students. Okay. So first of all, see, the value of I will be 1. Condition true. Control will go inside the loop. Now you'll have the message enter roll number. Okay, so you will enter a roll number. This message will get enter a roll number as it is. This message will have. Then consider we are entering 1 from the keyboard. You are typing 1 from the keyboard, that will go to RNO. Then you will be asked for enter marks. Okay, so then you will enter the marks, that will be stored into marks variable. Consider you are entering 25. Okay, out of 50 मान लो. Then these two data we have taken from the keyboard as input. हमने keyboard से input ले लिया. Now what to do with this data? We have to write this data on the file.
So to write the data on the file, this object is responsible. So by this, we are writing the data on file with the function write int. If you want to write int type of value to the file, the function is write int. If you want to double type of value, write double, write float, write int, write long, write short. The functions are there. Okay. So here the data RNO is of this type, of int type. This variable RNO is int type. So we are writing on the file. This dout write int function will write this the value of RNO on the file, which name is marks.dat. And the same thing will happen here. This dout object, this function write double function will write the value of marks. The variable marks is of double type. Let me show you again. See, here is the RNO is of int type, double marks is of double type. So the value of marks will be written to the file, which name is marks.dat. This is connected with that. So dout.writeInt, we are writing that this value to the file. Dout.write double, we are writing the double type of value, that is the value of marks to the file. Okay. So simple things. This I'm going to, after that we have to close all the streams. Dout.close, fout.close. These streams which we have created, they are closing. Okay. Now I'm going to show you this practically. I'm going to show you. Okay. I will run the program and I will show you. Will create the file also. So here I have opened command prompt. Here what we type cd slash jdk 1.5.0 slash bin. Okay, this we have done. Now will I have already typed, I have created the file already. I have compiled the program. I have run the program. Everything I have done already. Just let me show you. This is file name is notepad. The file name is, I think I have taken b file dot java. This file I have already created. The same thing here. I'm going to make the file name as marks.dat. Marks. Okay. Marks.dat. This program already done. Okay. So font थोड़ा छोटा करें. Just enter. Okay, this program I've already done. I'm going to execute this program just to save the file. Then we come back to command prompt, as you know the process. Then here we type java c. File name is what? B file I have taken, b file dot java. I'm compiling this file. So there is no errors. Now I'm going to run the file. To run the file, what we type? We type java space class name. What is class name? I have taken C. Bin out. Binary file output I have taken the name as per that. Bin out. Bin out. So you can see this message, enter roll number. I am entering 1. The marks 50. This is the marks of first student. Now I am entering the marks of second student. Roll number marks 60. Enter the roll number 3. Marks 20. Enter the roll number 4. Marks 70. Enter the roll number 5. Marks 10. Okay. So these data we have entered into the file. I'm going to show you that file also. Let's see. As you know, this file I have created, this program file is where is this program file? This program file is in C drive JDK 1.5.0 and bin folder. So the file also will be there only. So here I'm going to show you C drive and JDK 1.5.0 and bin. Here the file name was the file which you have created name is what? Marks.dat. Can you see this? And this is binary file, you cannot read it. I'm going to open it and see. It's not human readable. It's asking for, see, the such things will get. Nothing will be there. So we cannot read such files. It is not in the form of human readable. Okay, human readable form में होता है नहीं. Binary file program से ही read कर सकते हैं हम, ऐसे normally read नहीं कर सकते. These data are there. I will show you. Now I'm going to run the program. Through that I will read the data from this file. This file we have created, I have shown you. This is binary file. You cannot read it. You can read it through the program only. So I have written another program also. Through that we will read that file. Okay, so that another file is
Another file name I have taken as b file1. So here we go. This is the file. Another program. Okay. So this time we are going to read the data from file. So process will be what? We will take input from the file. इनपुट कहाँ से लेंगे? फाइल से इनपुट लेंगे. डेटा कहाँ से फेच करेंगे? फाइल से फेच करेंगे. और उसको लिखना कहाँ है? मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है. राइट कहाँ करना है? मॉनिटर पे आउटपुट देना. इनपुट फाइल से, आउटपुट मॉनिटर पे देना. इस बार का ये प्रोसेस है. ठीक है, तो देखते हैं. bin see here, this bin inp. First of all, let me explain this, then I will come to this practical part. See here. So program to read from binary file. Okay, this is there. To import java.io.star. Things are clear. Here also we are going to use two classes of this package: file input stream and data input stream. Okay. So first of all, we are creating the object of file input stream. By creating this, we are creating the file input stream. Okay, means data input will be taken from file. The data input will be taken from the file and will be stored to file input stream first. From there, program will fetch the data. After processing, it will send to the standard output stream, and from there it will be shown to the monitor. Okay, this is the process. Okay, so I'm going to explain again. So if, by creating the object of file input stream, we are creating the file input stream and we are connecting that file input stream with marks.dat. Okay. Then another object we are creating of data input stream dr, any object name, and this is responsible to read the data from the file. Okay, and that we are connecting with the input stream. That input stream is connected to the file marks.dat. Okay. By creating the object of file input stream, we are creating the file input stream for the file marks.dat, and we are connecting this marks.dat with this file input stream. Then we are creating this object with this file input stream, which is already connected with this file. Okay, it is happening. We have created two objects of the class. Now one thing, see here, end of file. Since we are reading the file, तो कब तक रीड करना है? जब तक सारा डेटा रीड ना हो जाए तब तक रीड करना है. तो कैसे पता चलेगा कि पूरा डेटा रीड हो चुका है? How will come to know that all data we have read? Okay, so for that what happens, here I will tell you, I have taken a variable, boolean type of variable EOF for end of file. Any variable you can take. I have taken one simple boolean type of variable. Initially I am keeping it false. The value of EOF I am initializing with false. क्योंकि मान लीजिए अभी end of file, मतलब end of file आना मतलब फाइल खत्म हो गई, मतलब फाइल में कोई डेटा नहीं रहा, तो end of file मिल जाए, उसके लिए वेरिएबल लिया. अभी स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या रखते हैं? फॉल्स. मीन्स अभी हमें एंड ऑफ फाइल नहीं मिला है. ओके, स्टार्टिंग में जैसे एंड ऑफ फाइल मिलेगा इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देंगे. तो नॉट EOF थोड़ा समझना ध्यान से. नॉट EOF मीन्स the value of EOF is false. The not EOF means true. Okay, EOF is what? This time false, not EOF means true. Then try. Here try and catch block, let me tell you, this is also related to exception handling. So please don't think more about this. अभी बस यहाँ समझ लो कैसे लिखना है. What will happen? What is the use of try block? If any runtime error, if any exception will occur in the try block, अगर कोई भी runtime error try block में आएगा तो कंट्रोल सीधे इस कैच ब्लॉक में चला जाएगा और एक ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो भी मैसेज तुम प्रिंट करना चाहो और जो भी इसके अंदर करना चाहो. मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है. ट्राई एंड कैच ब्लॉक के केस में अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई भी रन टाइम एरर आता है तो कंट्रोल क्या होता है? ट्राई में अगर कोई भी ट्राई ब्लॉक में कोई भी रन टाइम एरर आएगा तो कंट्रोल सीधे कहाँ चला जाएगा? कैच ब्लॉक में चला जाएगा. और कैच ब्लॉक में चला जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज लिखे रहोगे सिर्फ मैसेज प्रिंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई से कैच ब्लॉक में जाने के रीजन क्या है कि जब पूरा फाइल का डेटा रीड हो जाएगा, पूरा फाइल का जब डेटा रीड हो जाएगा तो ट्राई में ये जो फंक्शन है, जो रीड डबल फंक्शन है, रीड इंट फंक्शन है, ये एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं. मतलब पूरा डेटा रीड करने के बाद भी अगर हम फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे तो रन टाइम एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा. दैट एक्सेप्शन इज कॉल्ड EOF एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन. तो जैसे एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आएगा कंट्रोल इस कैच ब्लॉक में आ जाएगा. यहाँ पर हमने लिखा है एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन E1.
E1 प्रिंट करोगे ना तो E1 एक स्टैंडर्ड मैसेज प्रिंट होगा। तो ये EOF एक्सेप्शन द क्लास नेम, एक क्लास है, मैंने बताया, कभी एक्सेप्शन के लिए भी वीडियो बना दूंगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। जैसे प्रोग्राम में लास्ट, जैसे डेटा फिनिश हो जाएगा, ये फाइल, ये लूप चलता रहेगा, देखो लूप यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी यहाँ तक है, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि EOF की वैल्यू ट्रू ना हो जाए। जैसे EOF की वैल्यू ट्रू होगी, नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो कब तक हमें ट्रू करना है, कब तक हमें फाइल रीड करना है, जब तक कि फाइल का पूरा डेटा रीड ना हो जाए। तो जब फाइल का पूरा डेटा रीड हो जाएगा तो फिर से अगर हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करते हैं, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन रिटर्न करते हैं, मतलब तुरंत रन टाइम एरर आ जाएगा। फाइल में डेटा है नहीं, हम डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल रन टाइम एरर आ जाएगा। तो तुरंत कंट्रोल क्या होगा, ट्राई ब्लॉक से कैच ब्लॉक में चला जाएगा और यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो भी है, ये मैसेज की जरूरत नहीं थी, और EOF की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ट्रू होगी, फिर उसके बाद जब कंट्रोल वापस जाएगा तो ये EOF के लिए क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, तो नॉट ट्रू क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा ट्रेस करते हैं। आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक्चुअली ट्राई एंड कैच ब्लॉक से कंफ्यूज मत होना, उसको देख के दिमाग ब्लॉक मत कर देना प्लीज। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सिंपली नहीं समझ में आता है तो उसको ऐसे ही लिख सकते हो, चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। क्लियर है, ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ EOF इज फॉल्स, सो नॉट विल मेक इट ट्रू, ओके। देन ट्राई ब्लॉक में आते हैं। हियर वी हैव टेकन वेरिएबल this read int function dr is the object which will of which class, data input stream class dr, and this is here to read the data from the file। अब यहाँ पे ये जो read int function है, ये डेटा कहाँ से रीड करेगा, फाइल से, जिस फाइल से dr कनेक्टेड है। फाइल का नाम क्या है, marks.dat। तो ये डेटा read int मतलब एक इंटीजर वैल्यू वो फाइल से रीड करेगा और RNO में स्टोर कर देगा। उसके बाद ये read डबल फंक्शन एक डबल टाइप केवल रीड करेगा और मार्क्स में स्टोर कर देगा। हमने इसी सीक्वेंस में स्टोर भी किया है, रोल नंबर मार्क्स ऐसे इनपुट किया है, तो उसी सीक्वेंस में हम रीड भी कर रहे हैं। तो ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर क्या आ रहा है, मतलब फर्स्ट रोल नंबर और फर्स्ट मार्क्स इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद रोल नंबर, वो हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कहाँ आउटपुट देता है, आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब यहाँ से डेटा सिस्टम डॉट आउट, ये डेटा कहाँ देगा, आउटपुट स्ट्रीम में, और वहां से मॉनिटर पे चला जाएगा। मतलब ये तुम्हारे मॉनिटर प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर इक्वल टू 1, मार्क इक्वल टू मार्क्स की जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ओके। फिर उसके बाद अब कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, फर्स्ट डेटा था, अभी एंड ऑफ फाइल नहीं आया, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। कैच ब्लॉक में तभी जाएगा जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आएगा। फिर ये लूप की क्लोजिंग है, यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा। तो EOF की वैल्यू अभी भी ट्रू ही है, तो ट्रू, सॉरी फॉल्स है, EOF की वैल्यू फॉल्स है कंडीशन, तो फॉल्स नॉट फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फिर आएगा, फिर से रोल नंबर रीड होगा, तो अब सेकंड वाला रोल नंबर रीड होगा, RNO में स्टोर होगा, फिर सेकंड वाला मार्क्स रीड होगा, वो मार्क्स में स्टोर होगा, फिर रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट हो जाएगा, 2 मार्क्स प्रिंट हो गए, सो ऑन, 3 4 5 5 ही डेटा में स्टोर किया है। जब ऑल 5 रिकॉर्ड्स विल बी read, when all 5 records will be read, then what will happen, 5 रिकॉर्ड रीड हो गया, उसके बाद भी अभी भी एक्सेप्शन नहीं आया, 5 रिकॉर्ड रीड करने तक कोई एक्सेप्शन नहीं आया, फिर यहाँ से वापस जाएगा कंट्रोल, EOF की वैल्यू फॉल्स अभी भी है, 5 रिकॉर्ड्स वी हैव रेड ऑलरेडी, समझ लो 5 रिकॉर्ड प्रिंट हो चुका है, नाउ वी आर ट्राइंग टू, देन कंट्रोल वापस आएगा ही, नॉट EOF नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ, ट्राई ब्लॉक में जाएगा। अब जैसे यहाँ पे डेटा रीड करने की कोशिश होगी, सिंस देयर इज नो डेटा लेफ्ट, वी हैव रेड ऑल द डेटा, नाउ दिस फंक्शन इज ट्राइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल वेयर नथिंग इज लेफ्ट टू रीड, सो यहीं पे एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक में कोई भी रन टाइम एरर आता है तो कंट्रोल सीधे कहाँ जाता है, कैच ब्लॉक में, सीधे कंट्रोल यहाँ आएगा, और उसके बाद अब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे, कंफ्यूज मत उसको लेकर ब्लॉक मत होना, बस एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन E1 लिख देना, यहाँ कंट्रोल आएगा, और इस लाइन की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, और EOF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रीड इंट फंक्शन जो है डेटा रीड करने की कोशिश करेगा, हम पूरा डेटा रीड कर चुके हैं, फिर भी हम डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो ऐसा जैसा मैंने बताया कि ट्राई ब्लॉक में जैसे ही कोई एरर आता है कंट्रोल कहाँ जाता है, कैच ब्लॉक में। अब EF की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अब EOF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और उसके बाद कंट्रोल यहाँ से इस लूप की क्लोजिंग से वापस जाएगा, तो EF की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो नॉट उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज फॉर फाइल आउटपुट स्ट्रीम, सॉरी
data from the file, sorry, reading data from the binary file. Okay, if any confusion you can ask through the comment section afterwards, means when I will go offline, means it will be uploaded on the screen on my channel. ये वीडियो अपलोड हो जाएगी बाद में जब हम स्ट्रीमिंग स्टॉप करेंगे. So I'm going to show you practically this file program. I'm going to show you practically. So here is the file which name is bfile1. This I've already shown you. Now I'm going to compile it. Java C bfile1 compile. Now to run the program we type java space class name. What is the class name I have taken? It is bin binary input. Okay, so bin inp. See, data which we have stored in that file, we have read it with the message roll number 1, marks 45, roll number 2, marks 48. This message ये लिखा ना हमने यहाँ पे रोल नंबर फर्स्ट रोल नंबर रीड हुआ, RNO स्टोर हुआ, फर्स्ट मार्क्स रीड हुआ, मार्क्स में स्टोर हुआ, फिर उसकी वैल्यू RNO और मार्क्स की वैल्यू प्रिंट हो गई विद द मैसेज रोल नंबर मार्क, रोल नंबर मार्क. देखो रोल नंबर मार्क सब डेटा प्रिंट हो गया. फिर लास्ट में जब वो पूरा डेटा रीड करने के बाद भी हम डेटा रीड कर रहे हैं तो कंट्रोल यहाँ क्या हो रहा है, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है. जैसे एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, कंट्रोल कहाँ जा रहा है, कैच ब्लॉक में. और देखो एंड ऑफ फाइल मैसेज तभी प्रिंट हो रहा है. देखो लास्ट में प्रिंट हुआ है, नहीं भी लिखोगे चलेगा. और EF की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, फिर ये कंडीशन नॉट ट्रू क्या कर जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा. ओके, सो इट इज द कॉन्सेप्ट. ओके, so I've tried my best to explain everything. So still any doubt you can ask to the comment section, and you can solve more question. I will come with a more question of this binary file data reading and writing process. Okay, so this is all about this video, and thank you students for watching my video. I cannot see how many are watching this time. Okay, first time I'm teaching live. अभी live में first time गया हूँ, इससे पहले मैं live नहीं गया था. So I hope the things were clear and I have not done any mistake, because live का experience अभी नहीं था. First time I'm going live. So students, how was the session, and any confusion or anything you can ask to the comment section, and I will come with more program. कुछ और प्रोग्राम के साथ हम आएंगे, अभी एक दो वीडियो और अपलोड करेंगे, और आई विल ट्राई टू सॉल्व some more questions. Okay, so thank you for this video, thank you for watching till end. Okay, so bye students, bye to all.